सो हा या क्वेश्चन पासून आपण स्टार्ट करायचं का? ओके सर. ठीक आहे. सो इथे आपल्याला लॅपलास ट्रान्सफॉर्म टी साइन 80 किंवा कॉस टी कॉस 80 हे काढायचे होते. तिथे क्वेश्चन मध्ये लिहिताना मी साइन टी फक्त घेतलं होतं, त्यामुळे हा इथे ए येणार नाही. इथे ए ची व्हॅल्यू 1 पुट करून सेम आन्सर आला असतं, बट ऍक्च्युअल मध्ये तिथे साइन 80 हवं होतं. सो याला दोन मेथड आहेत. एक म्हणजे आपण फर्स्ट फंक्शन कोणतं घेतो त्याच्यावर डिपेंडेंट आहे. सो कन्सिडर करा की मी फर्स्ट फंक्शन साइन 80 घेतलं. सो जर लॅपलास ट्रान्सफॉर्म साइन 80 जर घेतला तर त्याची व्हॅल्यू येईल ए अपॉन एस स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर. त्या टेबल मधून आपल्याला ही व्हॅल्यू माहित आहे. सो नेक्स्ट आपल्या अजून एक ट्रान्सफॉर्म्स ऑफ डेरिव्हेटिव्हच्या रूल्स मध्ये जर लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी एफ ऑफ एस असेल तर लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ टी एफ ऑफ टी याची व्हॅल्यू मायनस डी बाय डी एस एफ बार एस ही येते. ट्रान्सफॉर्म्स ऑफ डेरिव्हेटिव्हच्या प्रॉपर्टीने. आता इथे तीच प्रॉपर्टी यूज करून साइन 80चा लॅपलास ट्रान्सफॉर्म होता ए अपॉन एस स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर. सो इथे जर टी ने एक्स्ट्रा मल्टिप्लाय केलं असेल तर मायनस डी बाय डी एस आपल्याला करावं लागेल. सो जेव्हा आपण ते करतो इथे डायरेक्टली चेन रूलच यूज करायचा आहे. सो मायनस सपोज आहे तसंच आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 अपॉन एक्स ज्याची व्हॅल्यू येते 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर. सो इथे हा मोठी क्वांटिटी एक्स सारखी ट्रीट होतीये, बट एस स्क्वेअर पण एक फंक्शन रिमेनिंग आहे. सो त्याचा डेरिव्हेटिव्ह घेतल्यानंतर 2s आणि हा ए आहे तसा इथे आहे तसा. पण 1 अपॉन एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह घेतल्यानंतर डी बाय डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स मायनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर. सो हा मायनस आणि हा इथे ऑलरेडी असलेला मायनस हे कॅन्सल होऊन ही क्वांटिटी पॉझिटिव्ह बनेल. सिमिलरली फॉर टी इंटू कॉस 80 आपल्याला माहिती आहे की लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ कॉस 80 एस अपॉन एस स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर आहे. परत मी हीच प्रॉपर्टी यूज करेन आणि याचा डेरिव्हेटिव्ह घेईन विथ अ नेगेटिव्ह साइन. सो परत इथे कोशंट रूल यूज करावा लागेल. सो डिनॉमिनेटरचा स्क्वेअर आणि वरती लिहिताना डिनॉमिनेटर इंटू न्यूमरेटरचा डेरिव्हेटिव्ह जो की आहे 1 आणि मायनस न्यूमरेटर एस इंटू डिनॉमिनेटरचा डेरिव्हेटिव्ह विच इज 2s. तो टोटल 2s स्क्वेअर. हा नेगेटिव्ह सध्या कॅरी झालेला आहे आणि त्याच्यानंतर एस स्क्वेअर मायनस 2s स्क्वेअर त्याची व्हॅल्यू मायनस एस स्क्वेअर येईल, बट इथे ऑलरेडी एक नेगेटिव्ह असल्यामुळे ती क्वांटिटी पॉझिटिव्ह झाली आणि मायनस ए स्क्वेअर इथे लिहिलेलं आहे आणि डिनॉमिनेटर आहे तसाच एस स्क्वेअर मायनस एस स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर द होल स्क्वेअर. आणि जे नोट्स मध्ये केलेलं आहे त्याच्यामध्ये काही अज्युम केलेलं आहे की फर्स्ट फंक्शन हे टी आहे. सो फर्स्ट फंक्शन जर टी असेल तर त्याची लॅपलास ट्रान्सफॉर्म टी माहिती आहे आपल्याला. लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ टी पॉवर एन वॉज गॅमा एन प्लस 1 डिवायडेड बाय एस पॉवर एन प्लस 1. सो इथे एन ची व्हॅल्यू 1 आहे, सो गॅमा 2 डिवायडेड बाय एस स्क्वेअर. बट गॅमा 2 ची व्हॅल्यू आहे 1 आणि डिवायडेड बाय एस स्क्वेअर. आणि जो आपला पॅरामीटर एस आहे तो इमॅजिनरी असू शकतो. सो जे आपण काम करतोय याच्यामध्ये असं कधीच नाही म्हटलेलं की हे सगळं आपण काम करतोय ते रिअल मध्येच काम करत आहे. तो इथे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करायला मी फक्त इमॅजिनरी टर्म्स ऍड केली. सो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मध्ये काय होतं, इफ लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज एफ बार एस then Laplace transform of f of t into e to the power at was f bar of s minus a. So हा s minus a ने रिप्लेस करायचा. so इथे हा s स्क्वेअर s मायनस आय अल्फा होल स्क्वेअर ने रिप्लेस करायचा. इथे आय अल्फा आय ए हा ए चा रोल प्ले करतोय जो आपल्या शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मध्ये होता. सो पुढे स्ट्रेट फॉरवर्ड थोडं सिम्प्लिफिकेशन आहे. याला डिनॉमिनेटरला एक्सपांड केलेलं आहे, बट आपल्याला आय हा कधीच डिनॉमिनेटर मध्ये नको असतो म्हणून आपण रॅशनलाइज केला. सो मायनस 2as आहे त्याचाच कॉन्ज्युगेट प्लस 2as आय. इथे आय हवा नाही, इथे आय ने मल्टिप्लाय केल्यामुळे तो टोटल क्वांटिटी 2as होल स्क्वेअर बनेल. थोडस इथे 1-2 स्टेप्स गाळलेले आहेत, थोडस ते बघून घ्या एकदा कॅल्क्युलेशन्स. आणि
जेव्हा आपण हे एक्सपांड करतो तेव्हा इथे -2as आहे, कारण इथे नेगेटिव्ह साईन आहे, आणि हा +4as आहे. a² हे दोघे मिळून प्लस +2a² बनतील. बाकीच्या टर्म्स आहेत तशा, आणि हा ऍक्च्युली s² + a² द होल स्क्वेअर हा ब्रॅकेट बनून जातो, आणि राहिलेले टर्म्स रिअल टर्म आणि इमॅजिनरी टर्म हा सेपरेट केले. सिमिलरली बाय युलर्स फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे की e⁻I θ इज cos θ प्लस I sin θ. इथे थिटाची व्हॅल्यू 80 आहे. ओके, थिटाची व्हॅल्यू 80 आहे. सो इथे हा बनेल cos 80 प्लस I sin 80, आणि परत एकदा आपण लिनिअरिटी प्रॉपर्टीने त्यांना सेपरेट आउट केलेलं आहे. इथे एक रिअल पार्ट आहे आणि इथे एक इमॅजिनरी पार्ट आहे. सिमिलरली एंडला पण आपल्याला एक रिअल पार्ट प्लस एक इमॅजिनरी पार्ट मिळालेला आहे. सो फायनली कम्पेअरिंग रिअल अँड इमॅजिनरी पार्ट्स आपल्याला सेम आन्सर मिळून जातो. सो बेटर की या सेकंड मेथडने ट्राय करण्यापेक्षा मला वाटतं की फर्स्ट मेथडने थोडं जास्त इझी पडेल, कारण डायरेक्ट यूज ऑफ प्रॉपर्टी आहे. फक्त थोडंसं 2 वेळा सेम गोष्ट करावी लागेल, तर तितका फक्त ड्रॉप आहे. किंवा अदरवाईज मला तर वाटतं की फर्स्ट मेथड प्रेफर करणं जास्त बेटर आहे. सो आय होप काही जण मीटिंगला जॉईन झाले असतील. Okay, so shall we start with the lecture? So the next point that we are going to discuss is inverse Laplace transform. Inverse Laplace transforms. तो अब तक हमने जो किया वो उसका ही जस्ट उल्टा करना है. जो भी हम कर रहे थे, जो भी फंक्शंस है, जो भी प्रॉपर्टीज है, उनका यूज करके हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे थे. अब उन्हीं प्रॉपर्टी को उल्टे डायरेक्शन में यूज करते हुए हमें इनवर्स ट्रांसफॉर्म्स निकालने हैं. इसके लिए जो हमारा टेबल था, जो 8 फॉर्मूलेज हमने लिखे थे, वो सारे याद होने जरूरी है. तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जो एलिमेंट्री वाला स्टार्ट हमने किया था, तो ये सारा टेबल 7-8 जो भी फॉर्मूलेज थे वो हमें याद होने चाहिए. तो इस इस बार हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म वाले फंक्शंस देख के, लाइक 1/s हुआ तो इसका लैप्लास इनवर्स 1 रहेगा. एन फैक्टोरियल या फिर γn+1 अपॉन s पावर n+1 हुआ तो उसका t⁻n. मोस्टली ये अदर डायरेक्शन में रखते हैं. लाइक यहाँ पे मैं ऐसे ही स्टार करके लिखता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे 1/s पावर n+1 चाहिए, तो यहाँ पे जो ये न्यूमरेटर में था वो एक कांस्टेंट है, वो इस साइड जाके डिनोमिनेटर में चला जाएगा. तो यहाँ पे t⁻n डिवाइडेड बाय γ(n+1) रहेगा. ओके, या इसको हम कभी कभी इस तरह से भी देख सकते हैं, t⁻n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल. तो मोस्टली फैक्टोरियल के फॉर्म में ये रहेगा, अदरवाइज आइडेंटिफाई करना गैमा फंक्शंस मुश्किल है. तो जब मुझे ट्रांसफॉर्म निकालना है तो मैं मल्टीपल्स ऑफ हाफ यूज कर सकता हूँ, लेकिन जब मुझे इनवर्स निकालने में डेफिनेटली इजियर फंक्शंस दूंगा, जिसमें अ, वो गैमा फंक्शंस मोस्टली फैक्टोरियल में रहेंगे. सो कम से कम 5-6 तक के तो फैक्टोरियल आपको आइडेंटिफाई होने चाहिए. ओके, सो अगेन जो प्रॉपर्टीज थी उनको भी एक बार रिवाइज करना पड़ेगा हमें. सो चेंज ऑफ स्केल ज्यादा यहाँ पे यूज नहीं होगा, लेकिन लीनियरिटी और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का उल्टा, ये प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी पड़ेंगी कि हम उसको मतलब यूज में कैसे ला सकते हैं. सो बिफोर दैट कुछ सिंपल एग्जांपल्स लेते हैं कि जिससे
जिससे हम थोड़े कंफर्टेबल हो जाए. सो बिफोर यूजिंग प्रॉपर्टीज, most of the questions can be solved by method of partial fractions. Method of partial fractions. ये हम इंटीग्रेशन में क्लास 11 12th में यूज करते थे, वही मेथड यहाँ पे यूज करनी है. सो कंसिडर दिस एग्जांपल. तो सपोज f bar is given as 2s square minus 6s plus 5 divided by s cube minus 6s square plus 11s minus 6. Okay, so my question says find Laplace inverse of f bar s. So हमें Laplace ट्रांसफॉर्म का इनवर्स निकालना है. तो if हमें ये ऐसा फंक्शन फाइंड करना है जिसका Laplace ट्रांसफॉर्म एक गिवन फंक्शन हो. तो पार्शियल फ्रैक्शंस हमें वर्क करने के लिए हमें फैक्टराइज करना पड़ता है, स्पेशली डिनोमिनेटर. तो s इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं. सो कंसीडर, मैं एक बस ये पॉलिनोमियल p ऑफ s इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे इसके फैक्टर निकालने हैं तो मैं सेपरेटली इसे थोड़ा सा ट्रीट करूंगा कुछ देर के लिए. तो p ऑफ 1 अगर मैंने सब वैल्यू निकालनी चाहिए तो ये है कि 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 जो कि है 0. तो इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि s इक्वल टू 1 is a root or s minus 1 is a factor. सही है, s इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करने से हमें 0 मिलता है, तो s माइनस 1 इज ए फैक्टर. सिमिलरली हम दूसरे फैक्टर्स भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन बेटर वे कि हम सिंथेटिक डिवीजन से इसे सिंप्लीफाई कर ले. तो बाय सिंथेटिक डिवीजन, ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड करने की स्टैंडर्ड मेथड है. तो आई होप कि आपको इसकी थोड़ी प्रैक्टिस होगी. अगर नहीं है तो थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत यूज होने वाले हैं. सो हमारा रूट था 1. सो फर्स्ट कोएफिशिएंट, लीडिंग कोएफिशिएंट एज इट इज, सो 1 इंटू 1, इसकी वैल्यू है 1. माइनस 6 प्लस 1 इज माइनस 5. 1 इंटू माइनस 5 इज माइनस 5. 11 माइनस 5 इज 6. 1 इंटू 6, सो 1 इंटू 6, यहाँ पे वो वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, it's 6, and minus 6 plus 6 is 0. So this is the remainder. This is the remainder. And starting from constant, these are the coefficient of the variable here s. So coefficient of s, and the next one is coefficient of s square. If there are more terms, वो corresponding coefficient रहेंगे. तो जो मेरा p ऑफ s है, इसको मैं लिख सकता हूँ s माइनस 1 जो हमने फैक्टर आउट किया, और ये क्वांटिटी जो है स्क्वायर माइनस 5s प्लस 6. अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके हम देख सकते हैं कि हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 2s माइनस 3s प्लस 6, इस तरह से हम मिडल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं. मल्टीप्लीकेशन 6 चाहिए और एडिशन प्लस माइनस 5 चाहिए, तो माइनस 2 माइनस 3. तो s माइनस 1, यहाँ से मैं s कॉमन लेके s माइनस 2, यहाँ से 3 कॉमन लेके अगेन s माइनस 2 एंड अगेन s माइनस 2, इनको कॉमन लेके मैं लिख सकता हूँ s माइनस 1, s माइनस 2, s माइनस 3. जस्ट वेट फॉर अ while, I am getting a call.
Okay, so we got our three factors. So using these factors, we can rewrite our f bar s, which was 2s square, 2s square minus 6x plus 5 divided by s minus 1, s minus 2, s minus 3. तो यहाँ पे हम कोएफिशिएंट्स ऐड करेंगे, जो कि है, इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन एस माइनस वन प्लस बी अपॉन एस माइनस टू और सी अपॉन एस माइनस थ्री। तो हमें कोएफिशिएंट्स कंपेयर करके ए बी सी इन अनडिटरमिनेट वैल्यूज अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज निकालनी है। सो अगर मैंने ये डिनोमिनेटर से पूरी तरह से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास रहेगा 2s square minus 6x plus 5 should be equal to a into s minus 2 s minus 3 plus b into s minus 1 s minus 3 and c into s minus 1 into s minus 2. So यहाँ पे मैं अलग अलग वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके ए बी सी की वैल्यूज निकालने की कोशिश करूंगा। तो पुट s इक्वल टू 1। तो अगर मैंने s इक्वल टू 1 किया तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड बनेगा 2 माइनस 6 प्लस 5 विच इज 1 एंड दिस शुड बी इक्वल टू, नोटिस कीजिए कि s माइनस वन और s माइनस वन की वजह से b एंड c कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे बचेगा a इंटू माइनस वन इंटू माइनस टू। सो जो a की वैल्यू रहेगी वो होगी 1/2। सिमिलरली पुट s इक्वल टू 2। So by putting s equal to 2, we will have 8 minus 12, that is minus 4 plus 5, again 1. This should be equal to, a cancel out हो जाएगा, s minus 2 यहाँ पर है, c cancel हो जाएगा, s minus 2 यहाँ पर भी है, और बचेगा जस्ट b का कोएफिशिएंट जो कि है b इंटू प्लस वन इंटू माइनस वन। तो जो b की वैल्यू रहेगी वो रहेगी माइनस वन। एंड सिमिलरली s इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करने पे हमें मिलेगा 18 माइनस 18 0 एंड प्लस 5। सो लेफ्ट हैंड साइड 5 इज इक्वल टू, ए और बी कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस टू टर्म्स एंड सी बचा रहेगा जिसकी वैल्यू रहेगी 2c। ओके, तो देयरफॉर सी की वैल्यू रहेगी 5/2। ओके, तो फाइनली फाइनली जो हमारा एफ बार था उसको हम लिख पाएंगे 1 बाय, वेट अ मिनट अगेन, okay, again sorry for the disturbance. So we were rewriting the f bar s. So notice that f bar s can be rewritten as these values, बट हमने एफ बार ए बी सी की वैल्यूज जस्ट फाइंड किए। सो वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमें मिल जाएगा 2 माइनस 2 इंटू एस माइनस वन प्लस बी अपॉन, बी की वैल्यू आई गेस माइनस वन थी या, सो ये साइन चेंज होके माइनस बनेगा एस माइनस टू, और यहाँ पे सी की वैल्यू 5/2 थी, सो 1 अपॉन 5 अपॉन 2 इंटू एस माइनस थ्री। सो remember Laplace transform of e to the power at was, if you remember, it was s minus a. So notice that all these terms are of the same type. So I can rewrite this as half times, or when I want to take Laplace inverse of f bar s, Laplace inverse of f bar s,
I'm actually taking Laplace inverse of these terms, Laplace inverse of these terms. एंड अगर हम इंडिविजुअल टर्म के लैप्लास इनवर्स लेंगे तो हमें मिलेगा ये e टू द पावर t, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, माइनस यहाँ पे a की वैल्यू 2, सो e टू द पावर 2t एंड प्लस 5/2 e टू द पावर 3t, यहाँ पे a की वैल्यू 3 है. सो आई एम यूजिंग Laplace transform of e to the power at is s 1 upon s minus a. So using this property or this Laplace transform, I'm getting my solution. Okay. So method of partial fraction is the most commonly used method. So make sure to practice this method. Similarly, हम other properties का use करके भी Laplace transform निकाल सकते हैं. So let's list out the properties first. So properties of inverse Laplace transforms. Okay, so first one, we'll start with first shifting property. I will just say shifting property. Shifting property. So similar to the previous case, if Laplace inverse of f bar s is f, f of t, then Laplace inverse of f bar of s minus a is e to the power at into f of t. Then properties corresponding to multiplication and multiplication by t, division by t, derivatives and integration. So let's list out one by one. Again, if Laplace inverse of f bar s is f of t, and I'll just make sure that I don't have to worry about f of 0, so that I will add the condition f of 0 is 0. Then Laplace inverse of s into f bar s, so multiplication by s is f dash. Okay, so why this is, if it is not 0, it is some alpha, then that alpha should be here, so minus alpha. But we don't want, this looks quite ugly, so that's why we'll make sure that it is 0. Similarly, what if we divide by s? So if again this same condition, again the above conditions is same except this one, then Laplace inverse of f bar s divided by s is, so when we divide by s, we need to take the integration. And for t, we are taking the integration from 0 to t. Okay. Now for the next properties, we'll multiply t here. So for that, we need to take the derivative on the left hand side. But notice that while taking the derivative, it should be negative. So again, the first line is same. And then Laplace inverse of d by ds of f bar s is minus tf of t. You can add this minus here or here. It's your choice. And finally, property number 5, the first line is same. And Laplace inverse of integration of this quantity. So instead of f of s, I will write down the f of u. Integration is taken from 0 to infinity du. So integration of this one, if we take the integration, we have to divide by t on the other side. Okay.
So we have listed down the same properties again. So let's see an example using these properties. Okay. So consider this example. If f bar s is 1 upon s into s square plus a square, find Laplace inverse of f bar s. Okay, we'll try to solve this by two methods. By first one by using the partial fractions, and second one by using the properties that we have studied. Okay, so method one, partial fractions. Partial fractions. Okay, so f bar s is already given in the factorized form. So यहाँ पे factorized form में already given है. So I'll just consider the coefficient. So a by s plus bs plus c by square plus a square. Why I'm writing bs plus c here? I hope you remember these rules from partial fractions from class 11th and 12th. Okay, so यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री होगी उससे वन लेस डिग्री से न्यूमरेटर स्टार्ट होना चाहिए, तो इसकी वजह से बी एस प्लस सी लिखना कंपलसरी बनेगा. So multiplying by the denominator throughout, we will get 1 equal to a into s square plus a square plus bs plus c into s. So to calculate the value of a, we'll put s is equal to 0. So s is equal to 0 की वजह से bs plus c 0 हो जाएगा, ये मतलब उसका कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा, and we will get a1 is equal to a into a square, which will imply capital A is 1 upon a square. Similarly, we'll see the coefficients. So coefficient of s. Notice that coefficient of s लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 ही है, यहाँ पे कोई s की टर्म है ही नहीं, यहाँ पे बस एक कांस्टेंट है, और यहाँ पे c इंटू एस यही वैल्यू है, तो 0 इज इक्वल टू c. Similarly, coefficient of s square, लेफ्ट हैंड साइड पे s 0 s स्क्वायर है, 0s एंड प्लस 1 है, तो कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर 0, s का भी 0, बस कांस्टेंट 1. So coefficient of s square is 0, and left right hand side में as square and bs square. So coefficient of s square is a plus b. So this will imply b is equal to minus a, but a की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड की है, वो है 1 अपॉन a स्क्वायर. सो b की वैल्यू रहेगी -1 अपॉन a स्क्वायर. ओके, so therefore f bar s can be written as, from above values, 1 upon a square s minus b s का कोएफिशिएंट था, सो माइनस s अपॉन a square into s square plus a square. Okay, so therefore Laplace inverse of f bar s is same as calculating Laplace inverse of 1 upon a square s minus s upon a square into s square plus a square. ओके, सो इंडिविजुअली लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हम वापस लीनियरिटी की वजह से दिस 1 अपॉन ए स्क्वायर एंड दिस आल्सो 1 अपॉन ए स्क्वायर बाहर निकाल देंगे, तो हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एस चाहिए, बट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एस इज कांस्टेंट 1. सो 1 अपॉन ए स्क्वायर इनटू कांस्टेंट 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर इनटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. If you remember, this is
We know Laplace transform of cos AT is s upon s square plus a square. So comparing this or remembering this, we'll get cos AT here. So the final answer is 1 upon a square into 1 minus cos AT. Okay. So we got the answer by partial fractions. Similarly, I will solve this problem by using properties also. Method 2, by using properties. So again, what I need to calculate Laplace inverse of where is that function? 1 upon s into s square plus a square, right? So for that, we know Laplace inverse of 1 upon s square plus a square is sin 80, right? Not sin 80. There should be a, so that's why it should be sin 80 by a, right? Note that. I will write down in a box. Laplace transform of sin 80 was a upon s square plus a square. So using this Laplace transform, I can write down Laplace inverse of 1 upon s square plus a square as sin 80 upon s. So notice that I'm dividing the f bar s by s. So if I am trying to divide on my left hand side, so I'm dividing by s to left hand side. So corresponding change that will occur on my right hand side is integral. Okay. So I will integrate from 0 to t of this function, which is sin 80 by a. So instead of t, I will use the dummy variable as u, which looks nice. Otherwise, you can use the t. Not वो कोई बड़ी problem नहीं है. So 1 upon a is a constant. I need to take the integral of 0 to t of sin au du. But we know integral of sin au is minus cos au divided by a, right? I'm using the par that linear multiple form, and I'm evaluating in the limits 0 to t. So 1 upon a और ये 1 upon a मिलके 1 upon a square बनाएंगे. If I substitute the value t, I will get minus cos 80. If I substitute the value 0 instead of u, I will get plus 1 minus from the lower limit. And finally, I will get 1 upon a square 1 minus cos 80. So compare these two answers, this one and the method, the answer that we got from partial fractions. Note that they are same. Okay. So if you follow any method, you will definitely get the same answer. Okay, so don't worry about the answers. You'll get the same answers for every question or by any method. Okay. So practice more questions from the notes, from the problem sheets that was shared in during the regular classes. Now we will move on to the third method of calculating Laplace inverse, which is convolution theorem. Okay, I will just mark it as if you are comfortable with everything of this chapter Laplace transform, then study this section. I'm not saying कि इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, आ सकता है, but study this
इस पे एक ही क्वेश्चन आ सकता है और अगर वो आ गया तो डिफिकल्ट कैटेगरी में जाएगा. So better to you study this only if you are comfortable with the chapter. Otherwise, other methods are quite simpler compared to this one, and make sure to practice those. Okay. So what this theorem says, if Laplace inverse of f bar s is some f of t and Laplace inverse of some g bar s is g bar t. So हमारे पास दो Laplace ट्रांसफॉर्म हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. Then Laplace inverse of f bar s into g bar s is integral 0 to t f of u g of t minus u du, which is also written as f star g, where this star symbol stands for convolution operator. So by definition of convolution, f star g of actually it should be t of t is written as integral 0 to t, integral 0 to infinity, not t, f of u into g of some u with, well, I forget actual conditions, but uh, the convolution that we are using is a little part of the whole convolution, provided it is undefined or it is zero on the remaining part. So that's why हम इंटीग्रल 0 to t ही लेंगे. So proof is given in the notes. It's just a simple application of change of order from M2. So uh, let's start with one example of this type. So question number 1, find inverse Laplace transform of f bar s is equal to s upon s square plus a square the whole square. Okay. So हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि f bar s is actually s upon s square plus a square into 1 upon s square plus a square. Why? Because I know Laplace inverse of s upon s square plus a square is cos 80 and Laplace inverse of 1 upon s square plus a square is sin 80 upon a. तो ये दो चीजें मैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ. So to make it combined, I'll use the convolution theorem. So therefore, by convolution theorem, Laplace inverse of these two functions, which is f bar s, is, let's call this as g bar s and this as gt, and this as h bar s and this is as ht. So I'm actually taking Laplace inverse of g bar s. Wait a minute. Okay, we'll continue. So g bar s into h bar s, which should be g convolution h of t. Okay, so g convolution h of
don't know why I'm getting a call. Okay, so as before, the definition for convolution we are using is integral 0 to t g of u h of t minus u du. So here the value of g of u is cos 80 or cos au. Here h of u is 1 upon a into sine of okay. Wait for a while again. I'll just block that number. Okay, so sine of that a, instead of t, we have to write down t minus u. So t minus u, and we need to integrate with respect to u. So I'll just simplify this side as I will take a constant outside the integral. I will have cos 80 into sine of 80 minus au du. So to evaluate these types of integral, we cannot evaluate directly. We need to use the summation formulas of the trigonometric identities. So we know sine of a plus b is sine a cos b plus cos a sin b, and sine of a minus b is sin a cos b minus cos a sin b. So to get cos and sine, well, we can interchange the role, or we will just subtract it so that this will become positive and this will become again, sorry, this will become negative and this will become positive. So it will be 2 times of this. So from above, from using these properties, we can see this is 2 times of cos a cos sin b, which is on my in my integral. So that's why I'm dividing by 2 to remove that effect of that 2 into into uh, sine of a plus b. So sine of these two values. Okay, this should be a u, not 80. So sine of 80, these two values addition, and minus sine of subtraction of these two values. So 80 minus 2au. So we are integrating with respect to u. So now integrate, you will have 1 upon 2a, 1 upon 2a. This integration sine of 80 should be sine of 80 is constant with respect to u. We are integrating with respect to u, not t. So that's why choosing the dummy variable is important. Minus, this will be cos of 80 minus 2au. That there will be a negative sign because of the integration of sine, divided by this minus 2a, the coefficient of u. Okay. And we are evaluating in the limits 0 to t. So now we have 1 upon 2a. If I substitute the value t instead of the u, I will get t sine 80. When I substitute 0, I will get 0.
plus when I substitute t in place of u, I will get cos of 80 minus 280, which is minus 80, but cos of minus 80 is again 80. So I will just write down 80 divided by 2a. And when I substitute the value 0, I'll get cos 80. And because of the negative sign, again it will be plus 2 cos 80 by 2a. And finally, I will have 1 upon 2a into t sine t plus these are two same terms. So I will get cos 80 divided by these two will be cancelled when we take the common two out. Okay. So I know this is a pretty much linear calculation, linear equation, but that's why I suggest that you follow this method only if you are comfortable with the whole chapter. Okay. So today we will discuss the final point, the applications to the differential equation, and one question of this type is definitely bound to come. Okay. So there will be, I'll mark it as important. Why? One question is definite, or I will say confirm. I'll confirmly, there will be a confirm question on this type or of this type. Application to LDE, linear differential equations. So the all the method is given in the PDF. You can study that. Will directly solve the problems, and the important rules that we need to use here is this one: y dash t. So if Laplace transform of y of t is y bar s, then Laplace transform of y dash t, the first derivative is s y bar s minus y of 0. Laplace transform of y double dash t, y double dash t is s square y bar s minus s y of 0 minus y dash at 0. And finally, Laplace transform of y triple dash t is s cube y bar s minus s square y at 0 minus s into y dash at 0 minus y double dash at 0. Okay, so these are the important properties that we have to use to solve these types of problems. Okay, so I will just take one problem from the notes, or instead of notes, I will take one problem from question sheet. So to get the here for inverse, which is the last step, you can use, or I will directly say, you don't need to use the difficult method, which is convolution theorem. Okay, so there will not be any question in which you have to use the convolution theorem and then take the Laplace inverse. Okay, for these types of problems where I will be asking you to solve the LD, so there will not be any question in which you have to use the convolution theorem, otherwise you can't solve. So you can solve the same questions without using the convolution theorem also. Okay. Or with using the convolution theorem also, it's your choice. But I will design a question in which you can solve without using the convolution theorem. So consider these types of problems.
So question number 1. So solve y double dash plus 4y dash plus 3y is equal to e to the power minus t, provided y of 0 is equal to y dash at 0 is equal to 1. Okay, so given equation is y double dash plus 4y dash plus 3y is equal to e to the power t. Take Laplace transform. Take Laplace transform. So by taking the Laplace transform of both sides, I will have Laplace transform of y double dash plus 4y dash plus 3y should be equal to Laplace transform of e to the power minus t. But I know Laplace transform of y double dash is this one. Okay, it's s square y bar s, or instead of writing y bar s, I will just say y bar minus s y at 0 minus y dash at 0. So this is for Laplace transform of y dash plus 4 times Laplace transform of y dash, which is s y bar minus y at 0, and finally plus 3 y bar should be equal to, do you remember Laplace transform of e to the power minus t? So remember, Laplace transform of e to the power at is 1 upon s minus a. So here value of a is minus 1. So this will be 1 upon s plus 1. Okay. So substituting all the values, I will have y bar in bracket s square plus 4s plus 3. So I have clubbed this one, and this one together. Now I will substitute all these values. So minus s, y bar is 1. So minus 1 again, 4 times minus 1, which is minus 4. And here there is nothing. So minus 4 as it is, s plus 1. So therefore, I have y bar into s square plus 4s plus 3 should be equal to, this should be equal to 1 upon s plus 1 plus s plus 5. So right hand side can also be written as this as s square. This will be 5s plus 1s, which is 6s, and into 5 divided by s plus 1. And my on my left hand side, I'm still having y bar into s square 4s plus 3. So therefore, my y bar will be s square plus 4s plus 5 whole divided by s plus 1 into s square plus 4s plus 3. Okay. So we have a version of y bar s. So now I'll just use the partial fractions to simplify this more. So let s square plus 6s plus 5 divided by s plus 1. Notice that we can say factorize this as s square plus 3s, uh, s plus 3 and s plus 1, and this should be equal to a upon s plus 1 plus b upon s plus 1 the whole square and c upon s plus 3. So I should have s square plus 6x plus 5. I know whatever we are doing is quite time taking, but this is really important. Okay. So now put
s equal to, I need to cancel out some terms. So to cancel out this b and a, I can put -3. So I will have 9 minus 18 plus 5 should be equal to, I'm substituting s as -3. So 2 square, which is 4. 4 s, not s, 4c. So therefore, this is 14 minus. Uh, okay, I have made a mistake. This should be 5 plus 1, which is 6. So this should be 6. This should be 6. And this should be 6. So it should be 6. So this is -3 is equal to 4c. Okay, so someone was trying to point out that thing. That was the message, I guess. And c is equal to -3 by 4. Similarly, I can cancel out this a and c by putting s is equal to -1. I will get 1 minus 6 plus 6 should be equal to, uh, this is cancelled, this is cancelled. So I am substituting s is equal to -1. So I will have minus 2b. So therefore, value of b should be, oh no, plus 2b. So value of b should be half. And I will compare the coefficient of the highest degree term, that is s square. So I will have 1 here on my left hand side. Here, this is a square and this is c square. So 1 should be a plus c. So this will imply a is 1 minus c, but c is 3 by 4. So this is plus 3 by 4, because minus minus will become plus, and this is 7 by 4. So thus, my y bar s becomes 7 by 4, that is a, 1 upon s plus 1, plus half 1 upon s plus 1 whole square, minus 3 by 4, 1 upon s plus 3. And finally, you need to take the inverse. So taking Laplace inverse, we get, we know Laplace inverse of y bar s is y of t. This should be 7 by 4. Laplace inverse of 1 upon s plus 1 plus half times Laplace inverse of 1 upon s plus 1 the whole square, and 3 by 4 the Laplace inverse of 1 upon s plus 3. Okay, so 7 by 4 Laplace inverse of s plus 1 is e to the power minus t. I'll keep this half and Laplace inverse of s plus 1 for later. And Laplace inverse of minus 3 by 4, Laplace inverse of s plus 3 is e to the power minus 3t. So do you remember which rules do we need to use to calculate Laplace inverse of s plus 1 the whole square? So I'll calculate that here. S plus 1 the whole square is e to the power minus t into Laplace inverse of 1 upon s square. Why? Here I am using the property that if Laplace inverse, this is Laplace inverse. So Laplace inverse of f bar s is f of t, then Laplace inverse of f bar of s minus a should be f of uh, e to the power at into f of t. Okay. So using that property, I'm writing down this part, and I know Laplace inverse of 1 upon s square is
Laplace inverse of 1 upon s square is t upon 1 factorial, which is 1, or gamma 1 or gamma 2, which is 1. Okay, so using this, I will write down that quantity here. So this is my complete solution. This is my complete solution. So if you want me to solve one more question, I know this is a bigger question. So if you want me to solve one more question, just ask, or we will stop here. So some of you might be discussing in the chat. Okay, shall we discuss one more question or not? So notice that make sure to practice these types of problems where you have to calculate, or you have to use the Laplace transform to solve an LDE. Okay, so this chapter is actually 6 to 7 lecture chapter, and we are covering this in nearly 2 hours. So I know we are going pretty fast. We are not explaining that thing thoroughly, but the doubt window is still open. You can ask the doubt anytime you want, and due to some reason I will not be will do in the timetable also. You can see that we have not uh, placed any lecture on the 2nd of June, that is tomorrow. So I'm going out for some work. So we will start with Fourier series uh, either day after tomorrow, or maybe later than that. I'll inform you in the group, but for a while we will not have lecture tomorrow. Okay. Whether we will have the lecture day after tomorrow, that is on the 3rd, or not, I will discuss, or I will post that in the group. But we are not going to have the lecture tomorrow. Okay, so make sure to practice the questions on Laplace transform uh, during this free time. Okay, since I'm not getting any response either from the in the chat or verbally, we'll end the meeting here. Okay, so thank you. We'll stop here.